नंबर में कौन है केस में? जो सुबह का केस था ये सैयद असगर हुसैन सब्जवारी, ये केस है काशिफ महमूद का। सीनियर वकील है ना सब्जवारी साहब शेरवानी वाले। आप किस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये आपने सुबह का केस, यही इशू है आपके केस में, आप लाइफ टाइम बैन सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं? नहीं जी, मैं तो ये कहता हूँ कि नहीं, सिंपल बता दें, लाइफ टाइम बैन और 5 ईयर बैन और नो बैन। लाइफ टाइम बैन। सो माशाल्लाह आप खुद हैं, तो आप आते ना सामने, हम आप बार बार पूछ रहे हैं। नहीं देखिए, हमें मावनत चाहिए ना, कि अच्छी बात है कि आप माशाल्लाह सीनियर वकील, हम भी वर लुकिंग फॉर सम सीनियर काउंसिल टू कैनवस द अदर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, सो वी कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। खैर, आपने सारी बातें तो सुन ली, आप बैठे हुए थे ना सुबह से? नहीं सुन ली ना सारी बातें। हम आज अजर्न करेंगे, अब तो 3 बज गए, तो ये लोग भी आ जाएं, शायद इनके लिए कल मुश्किल हो आना, परसों पे रख लेते हैं फिर ये केस। ठीक है। और अगर आप कोई एनीवन कैन सपोर्ट, आप किसी का नाम तजवीज करें जिसको हम माइकस बना दें, क्योंकि दूसरा कैनवस करे व्यू पॉइंट। माइकस तो खैर न्यूट्रल होते हैं, मगर क्योंकि वी हैव द सीनियर काउंसिल हियर ऑलरेडी, द प्रेसिडेंट इज हियर, मिस्टर मखदूम अली खान इज हियर, सॉर्ट ऑफ नंबर ऑफ अदर अटॉर्नी जनरल इज हियर, आप भी इधर हो। फैसल सिद्दीकी साहब हो सकते हैं। किसी केस में थे अहमद या सलाउद्दीन। Case, Mr. Munir Malik was amicus. He was amicus then. We saw these. There were a number of Mr. Asma Jahangir was there. Munir Malik sir was amicus then. Whether he will be, how well he is. In Samiullah Baloch. No, but I thought the respondents would be opposing this. The respondents in these cases would not be opposing would be supporting the lifetime ban. Mr. Maqdoom Ali Khan, you won everyone over. So all the respondents are now against the lifetime ban. I don't understand. So who's who? In fact, my lord, the opposing side, they were initially were of the fact that it must be a lifetime. Prior to that, in 2018, we are those who are making out that we should not be given a lifetime here for the 5 years. So only one thing is this, my lord, the whole scenario, I want to just add one thing, that is that a declaration and the conviction, these are the 2 words which are very necessary to be adjudicated by this honorable court. The one thing is this, that the conviction which has been maintained by any criminal court, that has to be given a kind of the seal of legality may be coming from the Election Commission of Pakistan, because in that the original trial court has to send the record of that case to the commission, so that afterwards that can become into the force through the legality, that next time अब एक आदमी को सजा हो गई, एक आदमी को for 2 years under 199 200 of the RUPA or the now presently Election Act, or under 471, that conviction will thereafter be sent to by that court to the commission, Election Commission. The Election Commission will then going to file a complaint against the आप मुख्तसर बात करें ना, आप अपनी तकरीर कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं क्या आप कहना चाहते हैं? 62F की जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी वो इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट से स्टार्ट होंगी। मैं ये कहना चाहता हूँ। इसका फायदा क्या इस बात करने का? ये फायदा है कि बगैर सजा के आप कहते हैं कि बगैर कोर्ट के कन्विक्शन के आप कहते हैं कि डिक्लेयर किसी को नहीं किया जा सकता। नहीं सर, नहीं, कोर्ट जो इलेक्शन कमीशन को फिर भेजेगी और वहां से कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट पे हो सकता है, ये आप कह रहे हैं 62(1)(f) के ऊपर पोस्ट कन्विक्शन। जी सर। सनाउल्लाह बलूच साहब, ये देखें बहुत पेचीदा आईनी कानूनी मसला है। यकीनन आप पार्लिमानी मेंबर रहे और अच्छी तरह से आइन को समझते हैं, मगर हम आपको मौका देते हैं कि अगर आप कोई वकील करना चाहें, क्योंकि आप सपोर्ट कर रहे हैं ना लाइफ टाइम बैन को, तो क्योंकि ये इसमें ज़रा हमें तशरीह करना होगी, तो ज़रा यकीनन आपकी महारत है, पार्लिमानी महारत, मगर ये ज़रा बहुत टेक्निकल इश्यूज भी हैं, तो हम आपको एक मौका भी देते हैं। अगर आप किसी वकील को करना चाहें, आपकी मर्जी है।
तो आप कर लीजिए, ठीक है। हम आपकी बात हम नोट कर ली, मगर वो देखें फिर हमने जितने बहुत सारी आर्गुमेंट डिस्कशन यकीनन आपने सुने होंगे, तो आप अगर कोई करना चाहे वकील हम कर लें, तो हम परसों पे फिर इसको रखते हैं, परसों केस 11:30 बजे। मैं सर इसमें CMA first application RO has rejected my nomination papers on the ground that disqualification is perpetual and for life. इसीलिए तो हम चाह रहे थे ना once and for all सुप्रीम कोर्ट बैठ करके ये तायुन कर ले, बिकॉज एक RO कुछ करेगा, दूसरा RO कुछ करेगा। अच्छा मिस्टर मखदूम अली खान, one other issue, my lord. One is, you know, you win all or lose all. One is the middle way. The middle way is that Al-Samrez was the law undid its effect. Can we have the list of those cases where a non-obstante clause, irrespective of anything held in a judgment, and they were sustained? Because that could be the middle way, that we don't touch the judgment, but now that the law has come, it occupies the legislative domain. This is one aspect. The other aspect which has not been touched upon is that we have only read the constitutional provisions so far. Most of these cases deal with the earlier election laws, which was ROPA, Representation of the People's Act 1976. Did that law or the Election Act of 2017 provide any term for disqualification, or it simply reproduces the language of the Constitution? Because I'm familiar with ROPA, I'm not so familiar with the subsequent enactment of 2017. So if you can consider those as well, that does the law say anything at all? And the third thing which I want you to attend to is, did either law, ROPA or the Election Act of 2017, prescribe a period of disqualification which was not mentioned in either 62 or 63? Are you clear with the queries? Yes, my lord. Yes, my lord. And these, for everybody else as well, these queries they can attend to. My lord, and I will request any of my colleagues, if they want to put a particular query, that you all can come prepared on that. My lord, with one request and leave of your lordship. ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिस्लेटिव रिपील के ऊपर आप थोड़ा जी सर, उस पे यही मैं रिक्वेस्ट करने लगा था चीफ जस्टिस साहब से कि those bundles are also ready, that list is ready. Your lordship will have to allow me to file a couple of more bundles. मैं समझा नहीं, wasting a lot of paper. नहीं, which bundles? वो सर लिस्ट ऑफ केस लॉ मैंने बनाई हुई है, ये सबके लिए बना दें। जी सबके नहीं है, अभी भी सबके लिए। आपको नैब केस में भी कहा था कि iPads दे दें हमें, सेव पेपर। My lord, इस इशू पे एक्चुअली मैंने ऑलरेडी पेपर बुक्स बना ली हैं, वो वैलिडेटिंग जो क्यूरेटिव लेजिस्लेशन के ऊपर केस लॉ है, मैंने ऑलरेडी। तो आपको चले एक दिन का मौका मिल रहा है जी, अगर कोई और क्वेश्चन एनी ऑफ माय कलीग्स वांट टू आस्क, नॉट यू, आई एम सेइंग आई रिक्वेस्टिंग माय कलीग्स very serious question of ready with these queries. Briefly, my lord, the citations are already there in the CMA which I have filed, but these will be submitted separately as well. As your lord. Please attend to the question of repentance, which Samuela Baloch specifically records. My lord, yes. तो ये जरा आप वो भी आप जरूर देख लीजिए। My lord, एक बड़ा serious question of law है इन्हीं appeals में, जो जिसपे I would request my lords to also adjudicate, and that is what is the effect of suspension of sentence of a convicted person? Is it one thing we've already noted in our original order, which was a 3-member bench order. Of course, if my colleagues want to add to it, that we will stay clear of criminal cases, pendency. We are just going to restrict on qualification and disqualification, because the elections are. इस केस से तो नहीं ताल्लुक। My lord, वो judgment उसके अपील में मैं आया हूँ और वो sustain हो नहीं सकती, because that judgment is in violation of a number of judgments of the Supreme Court. वो judgment basically उसका effect ये है। हम principle of law तयन करना चाह रहे हैं। Individual cases हो सकता है हम उनको अलग कर दें, फिर सुने, छोटी बेंचेस सुने। ये 7 मेंबर बेंच अगर सुनने बैठ जाए तो पूरे इलेक्शन खत्म हो जाएगा, हम सुनते हैं।
सिर्फ प्रिंसिपल की मैं बात कर रहा हूँ, वो उन्होंने रिडंडेंट कर दिया है आर्टिकल 63(1)(h) को, जो हमने अभी बात में सुन लेंगे आपको। आपने जो कंसाइज स्टेटमेंट दिया, नंबर क्या उनका? माय लॉर्ड, उसका मेरा नंबर है जी 8, CMA नंबर 8 है माय लॉर्ड, और इस पे केस लॉ भी माय लॉर्ड मैंने सारा जो मैंने कोट किया हुआ, मैंने उसकी पेपर बुक्स भी बनाई हैं माय लॉर्ड। आपकी CMA कौन सी? Mine is 6, my lord. So what we do today, we'll observe loudly, and that I'm sure will be recorded. If anyone wants to canvass the contrary point of view, not to come and make a speech, but attend to the constitutional provisions and the law, we are ready to hear it. The contrary view being there is a lifetime ban. So because most of you are in support of a 5-year ban or no ban at all. So that offer is open to everybody. If we consider, we will appoint amicus as well, but at short notice, whether they can render even that assistance or not, because this has to be wrapped up very quickly one way or the other, because every returning officer should not be left confused what he has to do. I'm sure you all agree to that extent. Whatever it is, it should happen once and for all. And my lord, my CMA number 1 for stay is fixed today. Regarding the RO and civil appeal number 1946/2023, you've been disqualified. My lord, RO has held that he is disqualified for life, regardless of section 232(2) and regardless of orders passed by my lord. नहीं तो हम देख लेंगे ना, अभी हम अपील में जाएंगे ना, अपील तो कर लेना अपनी राइट्स ऑफ। As an abandoned caution, we have. हाँ तो वो कर लीजिए ना, पता नहीं हम किस तरफ फैसला करें। अगर हमने आपके फेवर हो गया तो उसका इफेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। I had drawn your attention to the 4 points which Ishaq Haqqani's case the court had left open with regards to which court would it be to give the declaration, the procedure to be followed, the standard of proof and the locus standi. It is PLD 2015 Supreme Court 275. At page 283, these 4 issues are identified but were left unanswered. So if my lords, and this is also for posterity, because this declaration of law, now we are looking at the time limit which is to be applied to this declaration of law, but how this declaration is to in fact be given is also something very important. Citation. 2015 Supreme Court, PLD 2015 Supreme Court 275, Ishaq Haqqani versus Nawaz Sharif, So you want to take it up? and page 283.